क्वेश्चन नंबर 12 का जो ए था वो काफी इनफैक्ट हार्ड है, मतलब डायरेक्टली नहीं आएगा। राइट, सो मतलब कर सकते हैं जैसे मैंने दिखाया उतने पूरे इसमें की पॉसिबल है, बट बहुत ब्रूट फोर्स मेथड से ही हो सकता है। राइट, और उसके लिए यानी तुम्हें ऑलरेडी फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी तुम ये कर पाओगे ऑन टाइम ऑफ कोर्स। सो क्या फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ? जब ये मेरा हुआ नहीं तो मैं राइट मेरे नोट्स में गया, मैंने पूरा वापस डिराइव किया सब कुछ, और फाइनली मुझे ये मिला। सो द थिंग इज कि सपोज T1 T2 दो पॉइंट्स है, मतलब PT1 PT2 ऐसे दो पॉइंट्स है, और वहां से तुम टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हो। T जो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, सपोज वो XT वाई टी है, जो कि अपने को पता है इज जस्ट A T1 T2 A टाइम्स T1 प्लस T2। राइट, तो मैं इसको लेट जैसे कैपिटल X बोल देता हूँ, इसको मैं कैपिटल Y बोल देता हूँ। राइट, द थिंग इज राइट, सो ये अपना ओके है। अपने को चाहिए सेंटर ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइब ट्राइंगल TPQ। सो वो कैसे निकालते हैं? उसके लिए मैं करूंगा a प्लस एक्स कैपिटल एक्स स्क्वायर अपॉन 2a, सॉरी सॉरी सॉरी, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई स्क्वायर अपॉन 2a कॉमा y अपॉन 2 into 1 minus capital X upon E, right? So this is kind of a formula for this. ठीक है। सो इसके बाद अपने को चाहिए, है इसका लोकस। ओ एंड बाय द वे, हम ऑलरेडी कर चुके थे कि T1 T2 जो है वो मल्टीप्लाई होकर 2 बनता है। राइट, या वो अपन ऑलरेडी कर चुके थे। या इसका क्या मतलब हुआ कि अपना जो कैपिटल एक्स है वो इनफैक्ट सिर्फ 2a है। मैं हर जगह पे वही डाल दूंगा, और कैपिटल वाई अपॉन 2 टाइम्स, ये 2 है, माइनस 2 इज -1। देयर वी गो। रियली क्या हो रहा है? एक्स इज जस्ट a प्लस कैपिटल वाई स्क्वेयर, बट कैपिटल वाई इज जस्ट नेगेटिव 2 स्मॉल वाई। राइट, तो ये चीज x है और ये चीज y है। राइट, मतलब स्मॉल वाई। राइट, कैपिटल वाई इज जस्ट नेगेटिव 2 स्मॉल वाई, तो यहाँ पे मैं वही चीज पुट करूंगा, स्क्वायर अपॉन 2a। सो दिस विल बी a प्लस 2y squared upon a, which means 2y squared is equal to a times of x minus a. Right, so अपना या there we go। और इनफैक्ट ये जो a मैंने यहाँ पे यूज किया वो वाला a, जो एक्चुअली पैराबोला का रहेगा ना, y squared equal to 4ax, वो वाला a रहेगा। या मतलब राइट, वर्टेक्स टू फोकस वाला जो डिस्टेंस है। एंड इन दिस केस a 1 है, वो अपने आप मतलब या नाइस। a का आंसर p। B का क्या होगा? What is B? Two parabolas having the same focus if their directrices are the x-axis and the y-axis respectively, the slope of their common chord may be oof, same focus. Hey, recently मैंने एक दूसरा alternative formula ढूंढा है for representation of conics. I don't know, maybe वो useful है नहीं है, एक बार देखते हैं क्या शायद से यहाँ पे काम कर जाए। The thing is कि कोई भी conic के लिए तुम्हारा जो क्या बोलता हूँ इसको, या तुम्हारा जो वेट राइट जो पॉइंट है वो मैं ऐसे पैरामीटराइज कर सकता हूँ विद द एंगल दैट इट विद द एंगल दैट एस पी वेक्टर मेक्स विद एक्स एक्सिस। सपोज मैं उसको थीटा बोलता हूँ, देन जो अपना पॉइंट रहेगा दैट कैन बी पैरामीटराइज एज ए अपॉन 1 माइनस ई कोसाइन थीटा, वेयर ई इज जस्ट द इसेंट्रिसिटी, और फिर वो टाइम्स कोसाइन थीटा साइन थीटा लिखूंगा मैं, बट इस इंस्टेड मैं जस्ट ई पावर आई थीटा लिखूंगा बिकॉज या complex numbers are sometimes easier। तो फिर ठीक है, in this case eccentricity is just 1 and a क्या था? A is the distance from the focus to the directrix but that times E। इस केस में E1 है तो वो just वो distance है which is 2a, right? Okay, so तुम बोल रहे हो दो पैराबोला का फोकस, राइट, दो पैराबोला के फोकस सेम है, राइट? If their directrices are the x-axis and y-axis respectively, huh, same focus x y are, wait, but doesn't that mean कि oh so just okay think about it, parabolas are looking like this, तो यहाँ पे कोई भी फोकस है, हम इसको ओरिजिन जैसे यूज कर रहे हैं अभी तो इनफैक्ट, राइट? या बट उन लोगों ने एक्स और वाई दिए, क्या फर्क पड़ता है? अपने को सिर्फ स्लोप चाहिए, राइट? तो जितना भी तुम शिफ्ट करो फर्क नहीं पड़ने वाला।
सो एक्स एक्सिस यानी और वाई एक्सिस यानी क्या, जस्ट दो रैंडम लाइंस इनफैक्ट। सो ये एक पहली डायरेक्ट्रिक्स और ये दूसरी डायरेक्ट्रिक्स रैंडम है, पूरा का पूरा रैंडम है, पता नहीं कैसे भी हो रहा होगा, मे बी लाइक ये सेंट्रल पॉइंट है कुछ तो भी है, आई डोंट नो, राइट। सो ये है जब तुम्हारा पैराबोला लाइक समवॉट स्टैंडर्ड, यानी कि जो एक्स एक्सिस है दैट इज द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। ये एग्जैक्टली स्टैंडर्ड नहीं है बिकॉज फोकस के अराउंड सेंटर्ड है। ओके, सो फॉर दिस पैराबोला हम क्या कर सकते हैं, विल जस्ट से ओके टू बी आयोटा ई पावर आई थीटा अपॉन, सो जितने भी पॉइंट्स है जब सबको शिफ्ट करो, मतलब सबको रोटेट करो अबाउट सेंटर, about sorry about the origin which is also the focus, सबको रोटेट करो बाय 90 डिग्री, राइट, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज जो भी है, राइट, प्लस माइनस आयोटा क्या फर्क पड़ रहा है, अपने उसे ज्योमेट्री देखनी है ना, राइट, एंड देन 1 माइनस कोसाइन थीटा। ओ एंड बाय द वे इसमें एंगल सेम है कि नहीं अपने को नहीं पता है, सो वी जस्ट से ओके अल्फा बीटा, राइट। और मेन चीज क्या है, अपने को सिर्फ ये देखना है कि व्हेन आर दीज, सो ये जो टेंजेंट्स रहेंगे, तो ये तो पॉइंट्स है, अब देखो टेंजेंट्स देखते हैं, टेंजेंट्स सेम कब हो जाएंगे, राइट। शायद से ये उतना अच्छा तरीका नहीं है सॉल्व करने का, वट एवर, एज इफ इट मेक्स अ डिफरेंस, इन एनी केस चलो उसको ट्राई करते हैं। यार मुझे लग रहा है कि शायद से उतना अच्छा नहीं, ओ ये अल्फा चाहिए था। एनीवे अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मुझे डी अल्फा अपॉन dt तो मिलेगा ही, बट मैं उसको देखूंगा नहीं, मुझे वैसे भी रिड्यूस करना है। सो दिस विल बी लाइक नो थिंक अबाउट इट, नीचे आ जाएगा 1 माइनस कोसाइन अल्फा का स्क्वायर, प्रोडक्ट रूल, वैसे भी 2a का फर्क नहीं पड़ता, सो हाँ उसको भूल जाओ, और इनफैक्ट ये भी फर्क नहीं पड़ता, मैं इसको लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे प्रोडक्ट रूल दिखाना है कैसे। सो ऊपर वाला डेरिवेटिव इज जस्ट आई ई पावर आई अल्फा विद रिस्पेक्ट टू अल्फा ऑफ कोर्स, नीचे वाली चीज 1 माइनस कोसाइन अल्फा माइनस नीचे का डेरिवेटिव व्हिच इज प्लस sin अल्फा एंड देन e पावर i अल्फा, या ओके। सो द थिंग इज कि वेक्टर जो अपने को एक्चुअली देखना है दैट्स गोना बी दिस थिंग, सो e पावर i अल्फा एंड देन या ये सारी चीज गंदी सी, हाँ weird right, yeah, so sin alpha plus 1 minus cosine alpha times iota whatever, यू नो व्हाट आई एम थिंकिंग, इसको मैं और रिड्यूस कर सकता हूँ, सो ये क्या हो जाएगा 2 sin अल्फा कोसाइन, वो सब चीज कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। सो 2 sin अल्फा अपॉन 2 तो अपन बाहर निकाल लेंगे, वैसे भी रिड्यूस करना है अपने को, क्या बचेगा कोसाइन अल्फा अपॉन 2 प्लस आई साइन अल्फा अपॉन 2, राइट। सो इट्स लाइक ई पावर आई बेसिकली अल्फा प्लस अल्फा अपॉन 2 यानी कि 3 अपॉन 2 अल्फा, राइट। सो ये स्लोप रहेगा, सॉरी ये डायरेक्शन रहेगी अपने वेक्टर की, अपने को सेम या फिर उससे अपोजिट डायरेक्शन चाहिए यहाँ पे, बट यहाँ पे आयोटा से मल्टीप्लाई किया, सो लाइक आयोटा ई पावर आई 3 अपॉन 2 बीटा, वी वुड वांट दीज टू बी सिमिलर और एटलीस्ट अपोजिट तो भी हो, राइट। ओके, सो ऐसे अल्फा और बीटा अपने को ढूंढने हैं, सो दैट दिस एक्चुअली हैपेंस, हाँ इजंट दैट, ये बहुत लंबा हो रहा है यार। ओके, और जो अपना टेंजेंट है दैट्स गिवन बाय, सो ये मतलब ये जो पोजीशन है बट प्लस सम मल्टीपल एंड देन ये चीज, राइट, ऐसे कॉमन टेंजेंट चाहिए ना अपने को वैसे भी, थिंक सेम सेट ऑफ पॉइंट्स पर करस्पॉन्ड करे वो, अपने को सिर्फ क्या चाहिए, अपने को सिर्फ स्लोप ऑफ कॉमन टेंजेंट चाहिए। दिस इज वियर्ड यार, स्लोप की कॉमन, ऐसे तो बहुत सारे लाइंस जिनका स्लोप सेम रहेगा, बट अपने को वो नहीं चाहिए, अपने को बेसिकली ये देखना है कि आई थिंक ये इतना यूजफुल नहीं है, अपन सिर्फ ये चीज कर सकते हैं और फिर उसको, राइट, ये चीज प्लस सम मल्टीपल ऑफ दिस थिंग, यहाँ पे ये चीज प्लस सम मल्टीपल ऑफ दिस थिंग, और ये ऐसे होनी चाहिए ताकि वो सेम पॉइंट्स को करस्पॉन्ड करे, बेसिकली अपने को लोकस ही देखना है ना पॉइंट्स का, स्लोप देखना है मोस्ट लाइकली, यहाँ पे अपने को टैन मिलेगा, यहाँ पे अपने को यार अल्फा और बीटा बहुत ही अलग अलग चीजें, मतलब
द थिंग इज बीटा इज दिस एंगल, और वो इसमें ऐसा कुछ खास यूजफुल तो मुझे दिख नहीं रहा है। अच्छा, अगर ये दोनों चीजें सेम नहीं चाहिए अपने को उनका ऐसा नहीं कि सेम चाहिए रहेगा, नॉट नेसेसरीली। नहीं, ये इतना यूजफुल नहीं है, नॉर्मली करते हैं इसको। आई थॉट कि हो सकता है क्योंकि इसमें अपने को सब कुछ फोकस के अराउंड सेंटर्ड चाहिए, बट नहीं, रहने दो। अपने को ऐसे इसके फॉर्मूले वगैरह पता नहीं है, सो फालतू में और हम कुछ गलत कर डालेंगे, उससे अच्छा जस्ट स्टिक टू द यूजुअल मेथड्स। सो राइट, वंस अगेन लेट्स जस्ट ओके डू दिस थिंग। सो यहाँ पे तुम्हारा ओरिजिन है, ये तुम्हारा जो पॉइंट है कुछ भी सकता है, जस्ट कॉल दिस थिंग एज आई डोंट नो, यू नो व्हाट आई एम थिंकिंग कि इसका हाफ कर लेंगे, इसका हाफ पॉइंट जो यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे अपन इनफैक्ट ओरिजिन सेटअप करेंगे, क्योंकि थिंग इज जो दोनों पैराबोला है वो इन दो लाइंस को टच करे जो कि इससे पास हो रही हो, राइट? या राइट। सो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये जो अपने दो पैराबोलास है उनका इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक रहेगा y, सो इस पैराबोला के लिए y माइनस जो भी ये पॉइंट है, लेट्स कॉल दिस थिंग एज a एंड दिस थिंग इज b, सो y माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, राइट? क्योंकि x या और इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हो जाएगा x माइनस a स्क्वायर, बिकॉज या a इज इक्वल टू 4by, so ये तो अपने राइट, एंड देन वी जस्ट वांट कि अपने को इनका कॉमन टेंजेंट देखना है। वाओ, ये तो अजीब क्वेश्चन हो गया, इनका अपने को कॉमन टेंजेंट देखना है। ठीक है, तो पहले वाला इतना मुश्किल नहीं है, सो जस्ट मीन y इज इक्वल टू you know whatever, so y minus b is equal to mx plus 2a upon m, in this case y is equal to b plus mx plus 2a upon m, ये तो स्टैंडर्ड सा लग रहा है। what about this guy? So for this guy you would have x is equal to a plus, I mean instead of m we just put 1 upon m, so 1 upon m y plus 2bm, nice nice, yeah। so अगर ये दोनों सेम है in that case, ओके इसको उधर भेज दो, इसका भी y is equal to mx minus am minus 2bm squared। so अगर ये दोनों सेम है then of course ये जो कांस्टेंट्स है वो सेम होनी चाहिए, लाइक b plus 2a upon m should be equal to minus am minus 2bm squared, but सेम फोकस है yes, but that's not important because ये फोकस अपन कहीं भी मूव कर सकते हैं। सो ये क्या बात हो गई, डायरेक्टर से सारा हाँ, बट अपन फोकस कैसे मूव कर सकते हैं ना। सो स्लोप ऑफ द कॉमन कॉर्ड में वेट, ओह सॉरी, कॉमन कॉर्ड बोल रहे, नॉट कॉमन टेंजेंट। ओके, व्हाट कॉमन कॉर्ड, ये एक पॉइंट रहेगा जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये एक पॉइंट है, ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स है यार, ये एक से 4 पॉइंट्स रहेंगे, ये तो सॉल्वेबल ही नहीं होगा इस टाइप से। ओह गॉड, या अब क्या, इसको सॉल्वेबल नहीं रहेगा ये। नहीं, ये बहुत वेग डिस्क्रिप्शन दिया इन लोगों ने। हाउ कैन समबडी इवन सॉल्व दिस, क्योंकि ये तो अपने को पता नहीं कि कौन से कॉमन कॉर्ड की बात कर रहे हैं। अच्छा, मे बी शायद, ओके तो फिर तेरे को चारों कॉर्ड्स या फिर 5 कॉर्ड्स, जितने भी कॉर्ड्स हो गए फिर सारे के सारे कंसिडर करने पड़ेंगे। अच्छा, लास्ट वाला जो अपना था ना पैरामीटराइजेशन, अपन वो यूज करेंगे इस केस पे। सो व्हाट वाज इट वंस अगेन, e पावर i अल्फा और या व्हाटएवर, लाइक ओके इस केस में जस्ट वो डिस्टेंस यानी कि 2a e पावर i अल्फा अपॉन 1 माइनस कोसाइन अल्फा। तो जब भी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, सो व्हेनेवर दिस इज इक्वल टू दैट, मतलब iota times 2b e power I beta upon minus cosine beta, right? Yeah, right. So अपने को ये दोनों equal लगने वाले हैं। Whenever that happens, still a और b तो in fact arbitrary है। So yeah, well that doesn't make any sense। अगर मैं इसको stretch कर डालूँ इस चीज को, तो yeah, मतलब ये जो slope था फिर वो तो चेंज हो जाएगा, बट स्टिल इनफैक्ट वो कॉमन कॉर्ड है। सो सिर्फ अगर स्ट्रेच करने से ये पूरा स्लोप खत्म, मतलब चेंज हो रहा है,
तो या मतलब क्या, ये तो अपन ढूंढ ही नहीं पाएगा कभी। ऐसा कुछ है क्या कि कोई स्लोप एक पर्टिकुलर स्लोप नहीं हो सकता है, फिर समथिंग लाइक दैट। आई डोंट नो, आई डोंट नो। कैन नॉट बी 1 4, नहीं मैं कर सकता हूँ इसको, मैं स्ट्रेच वगैरह करूंगा, इसमें 1 कर डालूंगा। क्या कर लोगे? या हाँ, कर सकता हूँ आराम से इसको, मैं कोई भी स्लोप में फिट कर सकता हूँ, यू नो। सो ये तो अजीब है, ऐसा क्यों? और ये सारे मतलब पॉजिटिव नॉन जीरो नॉन इनफाइनाइट स्लोप्स है, तो ये कैसा क्वेश्चन है? तो बहुत, ये तो काम ही नहीं करेगा। लुक, लुक, ये काम ही नहीं करेगा, राइट? तुमने मुझे बताया ही नहीं कि एक्चुअल में अपने को कौन सा कॉर्ड चाहिए, ऊपर से मुझे ये भी बताया कि ये लेंथ क्या है, क्योंकि मैं लेंथ चेंज, मैं बस ये लेंथ को चेंज कर दूंगा, मुझे पूरा अलग ही कुछ भी सेटअप मिल सकता है। फिर मैं बस इसको दोनों को साथ में स्केल अप कर डालूं, साथ में नहीं, से ओके, एक को स्केल अप एक को स्केल डाउन, समथिंग लाइक दैट, राइट? इस टाइप से उसको चेंज करो कि क्या कि इनफैक्ट हमारा ये जो कॉर्ड है उसका स्लोप चेंज हो है, राइट? सम काइंड ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोर्स, राइट? तो ये क्वेश्चन सॉल्वेबल ही नहीं है। कॉमन कॉमन कोई मतलब प्रॉपर स्लोप रहेगा ही नहीं इस टाइप से, सो जस्ट भूल जाओ इसको। बी नॉट सॉल्वेबल, नॉट सॉल्वेबल बिकॉज इट्स वेरी वेगली डिस्क्राइब्ड। देखो पूरा इन्फॉर्मेशन पता नहीं है, सो वी कांट डू एनीथिंग। सी क्या है? If M is the foot of perpendicular from P of a parabola, okay, to its direct, and SPM is an equilateral triangle where S is the focus, then oh, look, look, अच्छी बात है, मैंने वो इनफैक्ट दूसरा फॉर्म बिल्डअप भी किया। सो वी नो कि पैराबोला के लिए, सो असेंडेड अराउंड फोकस। लुक, अपने को पूरा ज्योमेट्री से डील करना है, राइट? फर्क नहीं पड़ता कोऑर्डिनेट्स क्या है, क्योंकि अपने को इंडियन एसपी रिटर्न करना है। सो माइट एज विल जस्ट यूज दिस थिंग कि 2a e power I theta upon 1, राइट? तो ये अपने पैरामीटर है, बट व्हाट वी एक्चुअली वांट इज जस्ट sp। और sp क्या होता है? ये e पर I theta हटा दो, तो क्या बचता है? सिर्फ इतना सा, माइनस e is just 1 cosine of theta, but theta is the angle sp makes with the x-axis. Easy as that, really easy as that। या मतलब तुम क्या बोल रहे हो कि तुम्हारे पास में ये तुम्हारा फोकस है, डायरेक्ट इसका ही तो भी यहाँ पर होगी, फर्क नहीं पड़ रहा। गॉट दिस p पॉइंट समवेयर ओवर हियर। तुम बोल रहे हो कि ये जो पूरा है वो इक्वल ट्राइंगल है, राइट? एसपीएम, तो ये जो रहेगा वो ऑफकोर्स 60 डिग्री रहेगा, बट ये चीज तो मतलब पैरेलल है ना इससे, तो ये एंगल 60 डिग्री है, सो थीटा इज 60 डिग्रीज। दैट्स इट, वी फाउंड द आर वैल्यू, राइट? इन दिस केस ए क्या है? ए इज जस्ट ए इज 1, राइट? फर्क नहीं पड़ता नेगेटिव दिया कि क्या दिया, अपन इन दी एंड उसको इस टाइप से कन्वर्ट कर सकते हैं। सो 2 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2, देयर वी गो, that should be 4, so 4 is the value, so q। let's go my capital P, okay, next। the normal chord of PT on the parabola, okay, subtends a right angle to the vertex, then t square। look, right angle का in fact एक राइट एंगल जब है, सो T1 T2 का कॉर्ड अगर राइट एंगल सबटेंड कर रहा है एट द वर्टेक्स, व्हाट इट मींस इज लाइक T1 टाइम्स T2 इज -4। और तुम बोल रहे हो कि एक नॉर्मल कॉर्ड है, मतलब कि अगर ये T1 है तो ये हो जाएगा -2 अपॉन T1 माइनस T1। तो बेसिकली तुम बोल रहे हो कि T1 टाइम्स 2 अपॉन T1 प्लस T1, दैट थिंग इज 4, राइट? सो T1 स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू, यानी कि ये 2 हो जाएगा, सो T1 विल बी प्लस माइनस, इज दैट करेक्ट? इसका भी 2 राइट है, प्लस माइनस, या ओके ओके, अपने को सिर्फ T1 स्क्वायर चाहिए वैसे भी, राइट? सो D का फिर 2 इज द आंसर, which means S। next 13, if a variable line is tangent to an ellipse, the locus of points h comma k is a conic C whose eccentricity is। अच्छा, ये लाइन टेंजेंट है इस इलिप्स को, whatever, ठीक है। क्या ये एक्स स्क्वायर्ड अपॉन 3 प्लस वाई स्क्वायर्ड अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, तो इसका जो टेंजेंट रहेगा ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस इनफैक्ट स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर, व्हिच इज 3m स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर इज जस्ट 2, राइट. सो इस केस में m की जगह पे अपन k यूज कर रहे हैं और ये चीज 2h है, राइट. सो ऑफ कोर्स 4h स्क्वायर इज जस्ट 3k स्क्वायर प्लस 2. नाइस, दैट्स द कॉनिक इन h and k. अच्छा, सो ये कॉनिक है और इसेंट्रिसिटी इज, सो h इज आवर x कोऑर्डिनेट, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 2. मोर लाइक इसको 1/4 कर दो, इसको 2 अंदर भेज दो ना यार, क्या जा रहा है. सो दिस विल बी लाइक x squared upon 1/2 minus y squared upon so 2/3 is equal to 1. Does that make sense? Right. So eccentricity के लिए क्या करना पड़ेगा? Of course, just ये चीज upon ये चीज, which is negative 1 upon that thing. So negative 4/3, right? That's equal to minus e squared. So e squared is just 1 plus 4/3, which is 7/3. So eccentricity is square root of 7/3, मतलब कि a का cube. Go to b. B is the value of a for which this ellipse is, if the okay. So a for the ellipse, if the extremities of the lattice rectum of the ellipse having positive ordinate lies on this parabola. Seriously? Sure. Extremities of the lattice rectum of ellipse having positive ordinate, मतलब कि positive y value, right? Okay, lies on this parabola. इतना भी बुरा नहीं है, I guess it's doable. So फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला जो एक्सट्रीमिटी है उसके लिए क्या रहेगा, जिसका भी ए ई कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए, राइट. सो 2b squared upon a in this case. Yes, that will be right, that will be the extent of the lattice rectum. Or same thing for negatives, like, but yeah, plus minus will should do it. So x square for both of them is just a squared e squared, which is like a square minus b squared, and you want that to be equal to minus 2 times y minus 2. So minus 2 times ye cheese minus 2, right? Okay, okay. But इसमें a और b दोनों है, so how am I supposed to do it? The value of a for which this happens. Wait, how can I even? But okay, first of all, this thing should be negative. Oh, come on, ये बहुत अजीब सा है. A for the ellipse. यहाँ पे कहीं तुमने a का यूज नहीं किया and whatever. ये क्या हो गया? ये कैसे? क्या है ये? हाँ? minus 2 times just wait what? बट ये तो दो वेरिएबल में है, कैसे सॉल्व कर सकता है इसको फिर? अच्छा, कुछ अभी इनइक्वालिटी शायद से सेटअप करनी है अपने को. Anyway, let's start this. 4 minus 2b squared upon a. We know that a is more than b. Then okay. अच्छा सोचो यार, इसको उधर भेज देता हूँ. मतलब मुझे इन टर्म्स ऑफ b आई थिंक a मिल सकता है. नहीं, b इन टर्म्स ऑफ a मिलेगा मुझे. या दैट्स मोर लाइक इट. मैंने वही तो बोला पहले भी, क्या पता जो भी. सो b स्क्वायर्ड times 2 upon a minus 1 is equal to 4 minus a square. So उसको उधर भेज दो. b squared is just equal to 2 minus a times 2 plus a upon 2 minus a, and then ऊपर a भेज दो. So a cannot be 2. I mean, if it cannot be 2, अगर a 2 रहा तो ये चीज not defined हो जाएगी. Yeah, doesn't make any sense, right? Think about it. अगर a 2 है, then what we actually have is 4 minus b squared is equal to minus b square plus 4, which is, I mean, pretty obvious. तो कोई भी p की वैल्यू काम कर जाएगी in that case. Yeah. So हाँ वेट, ये अजीब है. अच्छा, कोई भी v की वैल्यू काम कर सकेगी. सो मे बी लाइक वो पर आंसर देखे तो अच्छा, तो आई थिंक वो ऐसा बोल रहे कि किसी भी b के वैल्यू के लिए ऐसा हो जाए, ऐसा कुछ. आई मीन, आई जस्ट डोंट नो.
सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये कुछ ही कुछ हो जाएगा ना, क्योंकि बी मैं बढ़ा दूंगा तो मैं ए बढ़ा सकता हूँ एंड देन इट विल स्टिल वर्क एंड एवरीथिंग, राइट? क्योंकि ये इक्वेशन मतलब सो ए स्क्वायर प्लस टू ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर है ना ये इक्वेशन। अगर मैं ए बढ़ा देता हूँ तो मुझे बी बढ़ाने को मिल जाएगा एंड देन इन दी एंड मैं स्टिल बैलेंस मेंटेन कर सकता था कि स्टिल इस चीज से पास करे। सो ये तो बहुत मतलब हाँ ये काम ही नहीं करेगा। सो आई थिंक वो बोल रहा है कि कोई भी बी के वैल्यू के लिए ऐसा हो, राइट? हाँ फिर इन दैट केस ए मस्ट बी टू। सो बी का आर, ये बहुत ही पुअरली रिटन क्वेश्चन है। नेक्स्ट, an ellipse is inscribed in a circle and a point within the circle is chosen at random. Sure. If the probability that this point lies outside the ellipse is 2/3 and the eccentricity of the ellipse is, अच्छा सर्कल में से तुम कोई भी ओके नो प्रॉब्लम। यू नो कि जो जो अपना इलिप्स है दैट्स इज लाइक उसका जो एरिया है पाई ए बी एंड देन जो सर्कल है दैट का एरिया इज पाई स्क्वायर। आई मीन ऑफ कोर्स उसके अंदर इंस्क्राइब किया तो कहीं ना कहीं टच तो करने वाला होगा, राइट? सो अगर सपोज उसका राइट सर्कल का सपोज क्या बोलूं मैं, रेडियस ए है देन इसका मैं पाई बी रख सकता हूँ, राइट? एरिया एंड हाँ फिर क्या आपने को प्रोबेबिलिटी चाहिए दैट दिस पॉइंट लाइज आउटसाइड द इलिप्स। अच्छा जो इनसाइड वाली प्रोबेबिलिटी वो क्या रहेगी फिर 1/3 और वो प्रोबेबिलिटी क्या होती है जस्ट बी अपॉन ए एंड दैट्स इक्वल टू 1 अपॉन, हाँ ये तो इजी था। सो इसका स्क्वायर कर डालो जिसके वन ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9, सो ई स्क्वायर इज इक्वल टू 8/9, सो ई इज 2 स्क्वायर रूट अपॉन 3, सो इसका पी, सो सी का पी, टी का करते हैं। So D is the radius of the circle passing through the foci of this ellipse and having its center at 0,3 is अच्छा फोकस से पास होने वाला है एंड सेंटर एट 0,3। सीरियसली बेसिकली ऐसा बोल दो ना कि मुझे डिस्टेंस निकालना है फोकस से इसका, क्या है ये कुछ दे दिया है। सो एक्स स्क्वायर अपॉन 16 एंड वाई स्क्वायर अपॉन 9, राइट? इक्वल टू 1। सो फोकस क्या रहेगा ए ई स्क्वायर, व्हाट इज दैट? I mean a squared e squared, that is going to be like 16 minus 9 of course, which is 7. So and then oh wait okay 0,3 is kind of oh really really wow इतना घटिया दिया। ये जस्ट ऊपर वाला पॉइंट है, राइट? सो जस्ट द अपर मोस्ट पॉइंट ऑफ दिस इलिप्स बिकॉज ये नीचे 9 आएगा एंड देन सीरियसली तो ऑफ कोर्स इसका डिस्टेंस फ्रॉम दी फोकस इज बी ए एंड ए इन दिस केस इज 4। देयर वी गो डन। टी का आंसर एस है। क्या क्वेश्चन था? ओके 14 नंबर ऑफ 5 डिजिट इंटीजर्स विद सम ऑफ द डिजिट्स इक्वल टू 43 आर। 5 डिजिट इंटीजर्स चाहिए, सम ऑफ the digits is equal to 43. Hey, isn't that like oh yeah of course. So just start का तुम जीरो नहीं सेटअप कर सकते हो, उसके अलावा सब कुछ चल जाएगा, राइट? हाँ easy, no big deal, it's doable. So it's like 43 bars and 5 digit integers है, so अपने को 4 stars लगने वाले and then 43 bars of course. So right 43 stars 4 bars, it's going to be 47 C4, that's number of bits minus क्योंकि अगर स्टार्ट वाला जीरो रहेगा इन दैट केस तो मैं से 43 इन 4 इंटीजर्स सॉरी इन 4 प्लेसेस में डिस्ट्रीब्यूट करना। ओह ओके सॉरी वेट द थिंग इज कि ओह शिट अगर कोई तो भी इसमें तुम बहुत सारी गलत चीजें भी गिन रहे हो बिकॉज इसमें तुम ऐसी चीजें भी गिनेंगे जिसमें तुम्हारे जो डिजिट्स है वो 10 के ऊपर जा रहे हैं फिर से कुछ भी, सो ये सही नहीं है। या इट्स नॉट गुड but I'm thinking okay instead of that अपन generating functions use करते हैं, so each digit will represent like this, so 1 plus x plus, so या तो उसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा फिर x मिल सकता है फिर x स्क्वायर चलते जाओ x पावर 9 क्योंकि लास्ट हाईएस्ट डिजिट वही रहता है। और ऐसे कितने रहने वाले राइट ऐसे रहने वाले हैं क्या सॉरी एक काम करना अभी जनरल करते वैसे भी अपने को मतलब जो जीरो वाला रहेगा स्टार्ट में जीरो है
वो अपने को हटाना ही नहीं देन। तो राइट, लेट्स गो द मोस्ट जनरल वी कैन। तो लेट्स जस्ट से ऐसे n डिजिट्स है और जो सम है वो s है, राइट। सम नहीं, रहने दो, सम इज 43, वी नो दैट। ओके, दिस कैन बी रिटन एज x पावर 10 माइनस 1 टू द पावर, या फिर 1 माइनस x पावर 10 लिखते हैं, वो बेटर रहेगा, की पावर n एंड देन 1 माइनस x की पावर नेगेटिव n। सो इसको मैं पॉलिनोमियल एक्सपांड कर सकता हूँ, इसको पॉलिनोमियल एक्सपांड कर सकता हूँ, इसको एक्चुअली टेलर से एक्सपांड कर रहा हूँ, बट व्हाटएवर। सो 1 माइनस एन सी 0 x पावर 10, चलते जाओ। इन दिस पर्टिकुलर केस अपने को इनफैक्ट अपन सेम चीज इस दूसरे के लिए भी कर सकते हैं ना। हाँ ठीक है, तो पहले तो अपने को सारे 5 डिजिट इंटीजर्स चाहिए, तो n जो रहेगा वो 5 रहेगा। ओके, सो एन सी 0 इज लाइक 5, सॉरी एन सी 1 5x पावर 10, और अपने को क्या 43 तक चाहिए ऑफ कोर्स, हाँ जो भी है, प्लस राइट। ओके, तो हर एक में अपने को 43 वगैरह कुछ ना कुछ मिलने वाला है इस टाइप से। ये तो सही नहीं हुआ। अच्छा, सबको मैं मैक्सिमाइज करूँ, ओह और या सबको मैक्सिमाइज कर डालो, यू नो, सबको 999 कर डाला, क्या मिलेगा 45 सम मिलेगा। इसी पर अपने को दो कम करना है, तो जो पूरे अपने स्टैक्ड अप प्लेसेस है उनमें से अपने को सिर्फ दो दो यूनिट्स निकालने कहीं से, तो भी कहाँ से ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया ना। या राइट, दिस इज या लाइक इट्स वेरी इजी। सो इट्स बेसिकली तुम्हारे पास में अब दो स्टार्स हो गए, मतलब दो निगेटिव स्टार्स बोल सकते हो, राइट। मैं इतना सब कर ही क्यों रहा हूँ, वो एकदम लास्ट वाला दिया था तो वैसे भी वो होने वाला था। सो एकदम अब सिर्फ दो नेगेटिव स्टार्स ऐड करने हैं बेसिकली, राइट। तो कौन से इसमें ऐड करेंगे वगैरह वो सब अपने को देखना है। वंस अगेन स्टार बार थ्योरम, सो दो स्टार्स एंड कितने, चार बार्स, सो दिस विल बी 64 या फिर 62 whatever, which will be 6 into 7 upon, और इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में तुम अगर सामने वाले मतलब एकदम स्टार्ट वाले से दो निकाल भी लो, फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, राइट। या ओह दिस वाज नाइस एक्चुअली, रियली नाइस। सो ठीक है, 6 टाइम्स 7 क्यू, यार मैंने क्या लिखा, 6 टाइम्स 5 अपॉन 2 विच इज 15 इज द आंसर। सो ए का क्यू एकदम लास्ट वाला दिया ना इसलिए हुआ, अगर कम दिए होते या फिर बीच का दिया होता तो अपने को शायद से प्रॉपर जनरेटिंग फंक्शन से करना पड़ता, बट एनीवे अब अपन कर सकते। ओके, बी, सम ऑफ ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म, ओके मल्टीनोमियल क्वेश्चन बेसिकली, राइट, sum of all numbers where a plus b plus c is okay, these belong to natural numbers, and a plus b plus c is equal to 12 is 3 power k, where k is looks familiar. A plus b plus c, hey isn't that like, oh of course, suppose तुम्हें 12 एलिमेंट्स का एक सेट दिया है और उसको तुम्हें तीन सेट्स में ब्रेक करना है, राइट। ऑर्डरिंग मैटर नहीं करती, तो बस इसको तीन सेट्स में ब्रेक करना है, और वो जो सेट्स रहेंगे वो तुम लेबल करोगे बाद में ABC व्हाटएवर। द थिंग इज कि वेट, ओके, सम ऑफ ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म 12, वेट व्हाट, बट ऐसे तो बहुत सारे नंबर रहेंगे जो कि इस फॉर्म के हो, तो 12 फैक्टोरियल के ऊपर आने वाला है। तो इसलिए तुम पूछ रहे हो कि अच्छा दो अगर नंबर अपने को डिस्टिंक्ट रखने हैं, सो ए फैक्टोरियल, बी फैक्टोरियल, सी फैक्टोरियल डिस्टिंक्ट होना चाहिए, राइट। ओके, सो अगर ABC को मैंने बस स्विच कर दिया वो एक अलग चीज हो गई, उसके अलावा कैसे तुम उसको, या ये क्या हो गया, उसके अलावा तुम किस टाइप से उनको सेम कर सकते हो, है तरीका एक्चुअली में सेम करने का, यू नो, दो मल्टीनोमियल कोएफिशिएंट सेम हो जाए इवन दो तुमने नीचे वाले फैक्टोरियल से वो सिर्फ अरेंज नहीं किया हो, ऐसा ना हो, राइट। हाँ, 3 पावर k, यू नो आई गेट इट कि वो क्या कर रहे हैं, बट इन्होंने वर्डिंग ऐसे शायद से गलत कर डाली हो, क्योंकि सम ऑफ ऑल नंबर्स ऑफ दिस फॉर्म, द प्रॉब्लम इज कि ABC इन दैट केस, या कैसा हो जाएगा, सपोज तुमने ABC 1 2 3 लिया और उसके बाद 2 3 1 लिया, राइट। या फिर कुछ भी ऐसा नंबर, यानी ऐसा ऐसी
पेयरिंग की कि वो 1 2 3 का इफेक्ट जो है वो बेसिकली कॉपी करता हो, बट वो 1 2 3 नहीं है, वो सीक्वेंस कुछ भी और है, और ना वो 3 2 1 या फिर 2 3, वो सब नहीं है। उस केस में क्या, उस केस में कैसा होगा? ये तो सही नहीं हुआ यार, वेरी गुड। नहीं, ये सही नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, ओके, थिंक अबाउट इट, ये काम कर सकता है। सो 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल ABCS, मतलब ये जो नीचे वाली चीज़ है वो ऐसी हो सकती है, बट एट द सेम टाइम हो सकता है कि तुमने ये चीज़ ली हो 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये भी इनफैक्ट सेम देता है ना। सो अगर ऐसा हो गया तो अल्दो आई मीन उनका सम 12 नहीं हो रहा है, बट यू गेट द आइडिया राइट, कि ऐसा हो सकता है। सो हाउ कैन यू बी सो श्योर कि मोस्ट लाइकली ये, यानी अलग क्वेश्चन था, बट इन लोगों ने वर्डिंग ऐसी गंदी सी की कि वो ऐसा लग रहा है कि अलग क्वेश्चन है। ऑल नंबर्स ऑफ दिस फॉर्म, फिर उसमें तुम्हें क्या फैक्टोरियल्स का सम करना पड़ेगा, विच इज oh god no, I don't want that, right? मतलब वो फॉर्म वैसा चाहिए सिर्फ। दिस इज नॉट गुड, दिस इज जस्ट नॉट गुड, क्योंकि फिर ए और बी इनकी जो ऑर्डरिंग है वो मतलब आज जो भी है यार, चलो बस ट्राई करो। मतलब इसको जो नॉर्मल वे है सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि इसको प्रॉपर ऐसे सॉल्व करने से अपने को आंसर मिलेगा, कि मतलब सॉल्वेबल ही नहीं है उस साइड से। तो ठीक है, चलो फिर नॉर्मल वे से करते हैं। तो नॉर्मल वे क्या है कि ये मल्टीनोमियल कोएफिशिएंट है, इसलिए कैसा है कि तुम्हें एक सेट है 12 एलिमेंट्स का, उसको ब्रेक करना है तीन सेट्स में, ABC नाम देना उनको, राइट। तुम्हें पर्टिकुलर नंबर्स चाहिए, मतलब पर्टिकुलर नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए हर सेट में, लेट्स से स्मॉल स्मॉल बी स्मॉल सी। तो वो करने का तरीका 12 फैक्टोरियल अपॉन ये सारी चीज है। सो सारे ऐसे तुम बेस का नंबर्स ऐड कर दोगे, एंड देन यू जस्ट गेट सारे नंबर ऑफ वेज कि तुम हर टाइप से ऐसे 3 सेट्स में ब्रेक कर सको। हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज टू डू दैट? सो in fact number of ways to do it is just 3 power 12, बिकॉज हर एलिमेंट के पास में एक चॉइस रहेगी, क्या तो उससे इस सेट में जाना है, फिर इस सेट में, या फिर इस सेट में, ए में, डी में, सी में, राइट। और हाँ, वो चॉइस इंडिपेंडेंट है हर एक के लिए, राइट। तो तुम इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इन द एंड जस्ट गेट 3 power 12 थिंग। सो के शुड बी 12, बट ये बहुत गलत है इनफैक्ट, राइट। मैं ऑलरेडी बोल दे रहा हूँ कि ये बहुत गलत तरह से सॉल्व किया हमने, बट या एनीवे, नेक्स्ट। Number of ways to select 6 people out of 6 married couples in which exactly one couple is present is n. Then n upon 30 is. Sure. 6 people out of 6 married couples in which exactly one couple is present. Okay. Oh, okay. Now I understand क्या हो रहा है. So, कोई भी एक, मतलब तुम्हारे उसमें 6 married couples, कोई भी एक कपल को चूज कर लेते हैं. So 61 ways of, मतलब 6 ways of doing this. ओके। उसके बाद में जो बचे हुए कपल्स रहने वाले हैं उसमें से तुम्हें कोई भी दोनों कपल्स, मतलब दोनों लोगों को साथ में नहीं लेना है, राइट। उसके बाद इसमें चॉइस रहने वाली है। ओ, एंड तुम्हारे कितने बचे हुए अब? सो 6 मैरिड कपल्स, अब तुम्हारे 5 मैरिड कपल्स बचे हैं, और अब तुम्हें 4 लोग चाहिए। सो बेसिकली वो 5 मैरिड कपल्स में से हर एक में तुम्हारे पास में चॉइस आने वाली है, राइट। उन 5 में से तुम्हें 4 कपल्स को चूज करना है, सो 5C4। बट उन कपल्स में चूज के तुम में से या तो तुम या तुम्हारा उसमें चॉइस रहेगी कि तुम एक इंसान को लो या फिर दूसरे इंसान को लो। सो इसलिए 2 power 4, दैट्स नंबर ऑफ वेज टू डू दिस थिंग, राइट। दैट्स n, देन n upon 30 is, so each is upon 30 is like 5C4 5C1 basically, okay, 5, yeah. So that thing upon 30, 2 power 4, 2 power 4 is just 16, so C का S, D का 900 distinct n digit numbers are to be formed using only the digits. Okay, 900 distinct n-digit numbers are to be formed using only the digits 2, 5, and 7. Wait, what? The smallest value of n for which this is possible. Okay. So
राइट आई मीन ये तो बहुत ईजी है, लाइक जस्ट हर एक डिजिट, हर एक प्लेस वैल्यू में तुम तीन फेस वैल्यूज रख सकते हो, एंड दैट्स व्हाई 3 पावर n नंबर ऑफ नंबर्स दैट यू कैन गेट. सो ये चीज अपने को बड़ी चाहिए या फिर इक्वल चाहिए 900 से. हाँ, इट इज इजी, राइट. सो दिस इज लाइक 3 power 2 times 100, so this is close to 199. We should be 9 and 11, whatever. So 3 power 4 already 729, and 3 power 5 is just too big basically. So 3 power 4 is the way to go. Wait, no, 3 power 6, sorry. 3 power 6 is 729. उसको वापस 30 मल्टीप्लाई करो, तुम्हें 21 से बड़ा कुछ मिलता है, and that 2100 से कुछ बड़ा मिलता है, and that's why yeah, smallest is going to be 7 in this case, because 6 already right. So 7, D ka R. Next, 15th question. Match the curve in which the roots of the equation 1 lie. Z power n is equal to 1 minus z ki power n. It's power of n. That's weird. Z power n is equal to z. ये अजीब है. Isn't that like just a polynomial though? Because इसमें तुम्हें, हाँ, it's like an n minus 1 degree polynomial. It's gonna have just n minus 1 roots. Right. ये तो सिर्फ बहुत सारे पॉइंट्स है. सर्कल, अच्छा, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन gonna lie on that. Okay. So एक चीज जो सारे के सारे फॉलो करते हैं, that is that mod of z is equal to mod of 1 minus z, right? So that is like 0 और 1 जो है, right, इनसे तुम्हारे जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इनका जो है उसके ऊपर बैठने वाले सारे के सारे रूट्स. सो सर्कल नहीं, x इक्वल टू 1/2, दैट मेक्स सेंस. सो a का क्यूब, मुझे 2 मिनट के लिए लगा था कि एक्चुअल में ये जो है वो पूरा का पूरा कंटिन्यूअस कर्व है. नहीं, जब अपने को जो रूट्स है वो किस कर्व बैठते हैं अपने को वो देखना है. ओके, सर्कल सेंटर ना, n-1 रूट्स एक सिंगल सर्कल पे और वो सारे एक लाइन पे है, मतलब अजीब नहीं है. ओके, b का क्या होगा? हाँ, वंस अगेन सिमिलर स्टफ कि 1 और -1 से उनका डिस्टेंस जो है क्या z का वो सेम है. That's why x equal to 0 is the thing. So p और n-1 roots रहेंगे. So once again same story, unless of course repeated roots. So then I don't know. c क्या है? z power n is equal to 2 plus square root of 2, और ये क्या चीज डाल दी है? अच्छा, square root of 21 है. हर बार वही लगता है, square root of 21 iota. अच्छा, isn't that just a circle though, right? Because it's like the nth root of नहीं. Okay, z power n is equal to, it's like determinant of z की power n जो है, that is equal to determinant of 2 plus square root of 21 iota, right? Yeah, okay, this is actually very much correct कि ये जो है just n roots. Yeah, okay, understandable. So ये जो 2 plus square root of 21 iota जो भी है, ये उसकी एक nth रूट ढूंढ लो, और उसके बाद में जो nth क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, पहली nth रूट ऑफ यूनिटी, उसके पावर्स मल्टीप्लाई करो, तुम्हें वो सारे नंबर्स मिलेंगे. ऑफ कोर्स तुम्हें n नंबर्स मिलेंगे, राइट? तो वो सारे n नंबर्स इनफैक्ट इसके रूट्स रहेंगे. सो या बेसिकली क्या, सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन. सो c का r हो जाएगा. ओके, d, और ये भी यही दिखा रहा है ना, मैग्नीट्यूड जो है वो z का, दैट्स काइंड ऑफ कांस्टेंट. ओके, z माइनस आयोटा पावर n इज इक्वल टू, बस शिफ्टेड सर्कल है यार, जो प्रीवियस वाला था ओके थोड़ा सा अलग किया इन लोगों ने, व्हाटएवर. वंस अगेन सर्कल, n रूट्स रहेंगे इसके, और आयोटा पे सेंटर रहेगा. सो या s. ओके, 16th. If this line, okay, entirely lies in this plane, then entirely lies in this plane, huh? So wait, what we are saying is कि 1 comma alpha comma 1 plus I don't know like r beta comma -6 comma 2, sorry -2,
right? ये जो चीज है, this point is always on this plane no matter what value of r you choose basically, right? लो फिर डॉट प्रोडक्ट लो इसका. So 2 1 minus 6, it's going to be like 2 minus 6 है क्या, so minus 4 plus alpha plus r times क्या हो जाएगा, so 2 beta then minus 6 and then plus 12, just plus 12 of course, okay, is equal to 0. So ये चीज हमेशा होने वाली है for any value of r. Then of course alpha should be 4 and this thing, so 2 beta minus, yeah, like 2 beta should just be equal to minus 6, so beta should just negative 3. So alpha is 4, beta is minus 3, p and s. Okay, next. If the planes, these planes have no common point, then अच्छा बेसिकली ऐसा बोल दो ना कि ये जो 3 इक्वेशंस है या ये जो 3 इक्वेशंस है इसके कोई सॉल्यूशंस नहीं है, या लाइक जो सिस्टम रहेगा. व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स डिटर्मिनेंट मस्ट बी 0, राइट? बस अगर वो नहीं होता देन यू वुड हैव वेट, मैं सही तो कर रहा हूँ? या यू वुड हैव अ यूनिक सॉल्यूशन ऑफ कोर्स. या राइट, there's no common point then. Oh, determinant is 0 and also ये जो मैट्रिक्स is right, okay, इसको लिख ही जाता हूँ. So इतनी जो मैट्रिक्स क्या, augmented matrix of course, that is 2 minus 1 1 1 minus 3 1 alpha 1 1 और यहाँ पे क्या है 2 beta and 5. So ये determinant तो 0 होना ही चाहिए. अगर ये 0 नहीं है then yeah, that's kind of problematic because तुम right, okay, and also इनमें से कोई भी determinant 0 नहीं होनी चाहिए. मतलब कि ये जो चीज है that should be, you know, right, this thing in fact must be completely क्या बोल रहा हूँ मैं, off the plane in which these lie, right? So maybe like cross product वगैरह ले लो, कुछ तो भी component उसका डाल दो इसमें, you get the idea, right? Okay, so what determinant 0 कभी नहीं होना चाहिए, that's what I'm saying. ठीक है. And then of course अगर ये determinant 0 था then मतलब automatically ये determinant so ये वाला determinant भी 0 हो जाएगा और बाकी दूसरा भी हो जाएगा. So yeah, ये 0 है और ये 0 नहीं है. So let's do it. So ये determinant कैसे ढूंढेगा? पहले तो सिंप्लीफाई करने का ट्राई करते हैं, जान दो क्या सिंप्लीफाई करना है. ठीक है, करते हैं, क्या जा रहा है. So subtract किया, whatever, so like 2 minus 1 1, subtract किया minus 1 minus 2 0, subtract किया minus 2 2 and 0, right? So ये चीज मतलब कि minus 2 plus 2 alpha minus 2, right? That must be 0, so of course alpha should just be 2, which means है ही नहीं alpha equal to 2. ये क्या हो गया? इसमें गड़बड़ नहीं हो रही है? Of course determinant must be 0, otherwise ये solvable हो जाएगा, right? Right? Yeah, right. And this determinant must be, you know, non-zero. If this is 0 then ठीक है, वो तो होता ही है, right? So अल्फा के बारे में इसमें कुछ ऐसे मतलब यहाँ पे दिया नहीं है एक्चुअली, because but wait, what, how could this be correct? ये अजीब है. Okay, it's like minus 1 और plus alpha minus, oh sorry, minus 4. हाँ वही तो बोलूँ, कुछ मिल नहीं रहा था मुझे. So alpha should in fact be just 3. So वो रहेगा r, so इसका r तो है एटलीस्ट. और क्या है, ये चीज 0 नहीं होनी चाहिए, इसका करते हैं. ओ 1 1 1 हर जगह पे है, इसको यहाँ पे कैंसिल कर दे, whatever, you just do this thing. So ये हो जाएगा minus 1 1 2, subtract किया minus 2 0 beta minus 2, एक और बार subtract किया
बचेगा 2 and 0 and 3. So सिर्फ ये इसका मेरे को देखना है एनी केस, राइट. सो -6 इसका माइनर भी 0 होगा ना, दैट्स द थिंग. 0 नहीं होगा, सॉरी. And then -2 times theta minus 2 must not be 0. That just means -3 plus, sorry, minus hटा, 3 plus beta minus 2 must not be 0. मतलब कि beta should not be -1. That's the only condition. So Q and R. Okay, next. So C is if A, B, C are positive real numbers and AX plus BY plus Z is equal to 0. And okay, so these three equations have infinite common points. Then अच्छा, बेसिकली तुम बोल रहे हो कि डिटरमिनेंट 0 है एंड एट द सेम टाइम जो जस्ट तुम इतना ही बोल रहे हो कि वो जो दूसरी लाइन रहेगी वो तो राइट, वो डिटरमिनेंट्स अपने आप 0 हो जाएंगे. सो या ऑल यू आर एक्चुअली सेइंग इज दैट या फिर तुम सोच सकते हो कि शायद से ये जो है वेक्टर्स होते हैं मल्टीपल्स ऐसा कुछ तो भी हो रहा है. एनीवे, जस्ट डील विद इट. सो ए बी, देन यहाँ पे 1 है, फिर इसमें क्या है 1BC, एंड देन इसमें है A1C. दिस एलिमेंट मस्ट बी 0 बेसिकली, राइट. क्या है ये? चलो करते इसको सॉल्व. इस टाइप से सॉल्व करना बेटर रहेगा या बिकॉज मैं इसको सेम चीज कॉपी कर रहा हूँ. A1 A B B, ये 2 बार B कैसे आया? वेट, हाँ ये भी B है. ओके व्हाटएवर. B B 1 1C C. मुझे एक्चुअली ये करने की जरूरत नहीं थी, बट व्हाटएवर. एंड द थिंग इज ऐसे जाना पहले तो. सो ABC then plus ABC plus 1, फिर ऐसे जाना है. सो -AB minus AC minus BC. ओके, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, राइट. क्या मैं ऐसे गया, फिर और ये चीज़ मिल गई, फिर मैं ऐसे गया और हर जगह मुझे बस नेगेटिव पुट करना था. वी गॉट द थिंग. ओके, एंड व्हाट वी वांट इज कि हाँ ये 0 है, उतना ही अपने को देखना था. एंड ABC इज बिगर देन और इक्वल टू अल्फा. देन अच्छा, तो अपने को सिर्फ अल्फा का देखना है. हाँ, वियर्ड. बेसिकली लाइक ABC ढूंढो, ABC ढूंढो, इतना ही था इसमें. एंड ABC, ओह दीज आर जस्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स. इंटरेस्टिंग. सो 2ABC plus summation of AB plus 1 is equal to 0. So weird, really. Okay, this is alpha. So, oh sorry, it should be minus over there. This is equal to summation of AB minus 1, and this is really weird. यार ये अजीब है. Wait, isn't that like saying कि 2ABC plus 1 which is equal to summation of ये सारी चीज that's bigger than or equal to, ये सारे positive real numbers है, right? That's bigger than or equal to 3 cube root of A square B square C square. Yeah, it's like saying that actually. Weird. So this is actually 3 and then ABC का चाहिए power 2/3, right? Is that correct? It must be correct. What else could be the thing? Okay, so this must happen. तो वहाँ पे मैं क्यूब डाल सकता हूँ ना डायरेक्टली, या वेट क्या पॉसिबिलिटीज है कि नहीं कर सकते डायरेक्टली इसमें क्यूब डाल दो, क्या जा रहा है. And ABC is just okay. तो basically मुझे ABC की range ढूंढनी है, and then once I find that I'll be good. So बस क्यूब कर डालते हैं दोनों साइड पे, and then just get थिंक कुछ और तरीका होगा ना ये करने का. It's like 2x minus x, so 3x की पावर 2/3 plus 1 is bigger than or equal to 0. हाँ, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? It's like 2 minus 2 upon x की पावर 1/3. अच्छा, so
अच्छा पहले पॉजिटिव है फिर बाद में नेगेटिव हो गया, तो एक पॉइंट पे ये चीज मैक्सिमम रही होगी या एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या हो रहा है, एक्स इक्वल टू जीरो पे ये चीज वन है, सो बहुत बढ़िया। इट्स गोइंग टू गो ऑफ टिल एक्स इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू वन पे ये चीज जीरो हो जाएगी, राइट, बिकॉज टू माइनस थ्री प्लस वन दैट्स गोइंग टू बी जीरो ऑफ कोर्स, isn't that right? वेट एक्स इक्वल टू वन पे ये भी चीज हो रही है बट अच्छा एक्स इक्वल टू वन के बाद में क्या होगा, जस्ट से आई डोंट नो एक्स इक्वल टू 8 और समथिंग, तो वहां पे 16 माइनस आई मीन वी नो एक्स इक्वल टू 8 पे ये जो डेरिवेटिव रहेगा दैट विल जस्ट बी माइनस वन लाइक वन, तो वो पॉजिटिव रहने वाला है एवरीथिंग, उसके बाद में इनफैक्ट पॉजिटिव ही है जब एक्स इक्वल टू वन से ऊपर चल जाएंगे। हाँ बट तब पॉजिटिव ही रहेगा ना, वेट मैं तो सोच भी रहा हूँ आई नो दैट, सो वन पे मिनिमम है फिर उसके बाद में मैक्सिमम है, जस्ट लाइक दैट, सो वेट बट इस हिसाब से तो अल्फा कुछ भी हो सकता है, मतलब ये तो कुछ भी वैल्यूज हो सकती है राइट, लाइक एबीसी की कोई रेंज ही नहीं रही फिर तो, यानी वो इन्फिनिटी जा रहा है विच इज गॉड दिस इज वेट व्हाट इन्फिनिटी जा रहा है, बट हाउ इज दैट गोइंग टिल इन्फिनिटी, वेट पहले डिक्रीज हुआ व्हेन एक्स वाज wait no when x was 0 this was positive, then x started to increase, क्या कर रहा हूँ, when x was 0 this was just really small in fact right, तो तब अपन बोल सकते हैं कि चीज नेगेटिव इन्फिनिटी थी, तो फिर इनफैक्ट वो बहुत ही फास्ट डिक्रीज कर रहा था, तो x इक्वल टू जीरो पे ये चीज स्टिल वन है एंड देन इट स्टार्टेड टू डिक्रीज, और टिल x इज इक्वल टू वन इट केप्ट ऑन डिक्रीजिंग, बट वन पे ये चीज जीरो हो रही है, जस्ट जीरो को टच करेगा, ओके सो टच जीरो एट दैट पॉइंट, ये अजीब है यार, बट इस टाइप से तुम्हें को मिनिमम मैक्सिमम कुछ मिलेगा ही नहीं यार, ये तो what is this, okay it's equal to summation of e minus 1 or something, ये तो मतलब ही नहीं बन रहा है या ये क्या हो गया, of course for this to be positive what must happen is that 1 should be bigger than x or negative 1/3, डायरेक्ट क्यूब सुधार सकते हो ना, ऐसा कुछ थोड़ी ना जा रहा है अपना, सो 1 is of course bigger than just x or negative 1, फिर रेसिप्रोकल लो, so x should be less than 1, so जब भी x 1 से छोटा है then at that point is positive, after that it's going to be negative, what after that it's going to be negative, हाँ अच्छा x is equal to 8 पे क्या हो रहा है, it's going to be 16, it's not right about this, डेरिवेटिव तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो क्या गड़बड़ हो रही है यार, हाँ उल्टा ले लिया मैंने, x bigger than 1, so right first it's going to be negative then it's going to be positive, so yeah just जीरो टच करेगा फिर बस उड़ते चला जाएगा, तो ऐसे तो इसकी कोई मतलब रेंज नहीं है इनफैक्ट राइट, या इसकी कोई रेंज ही नहीं है यार, ये तो गलत हो गया, ये तो बहुत गलत हो गया, एबीसी ओके इसकी कोई रेंज नहीं है, शिट व्हाट डज दैट मीन कि यहाँ पर इसका आंसर ही नहीं कर सकते, सो रहने दो इसको, सी आई डोंट नो इसको क्या होना चाहिए, डी मतलब ये चीज देखो ना यार, फॉर एग्जाम्पल लेट जस्ट सेट आई डोंट नो ए को जीरो सेट कर दिया, देन दिस इज लाइक सेइंग ओके ये तो बहुत ही घटिया एग्जांपल है, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं सेटअप करने, सो फॉर सम ए सम बी सम सी this must happen and then okay let's go to something else, let's use Lagrangian multipliers,
मे बी वो काम सो अपना फंक्शन जो अपने को मैक्सिमाइज करना है फिर मिनिमाइज करना है दैट्स ए बी सी अपने को उसका एक्सट्रीमम पॉइंट्स ढूंढने हैं ऑफकोर्स और ये अपना रिस्ट्रिक्शन है सो प्लस अल्फा टाइम्स अल्फा नहीं कुछ तो भी और बोल दो प्लस लैम्डा टाइम्स ये चीज सो टू ए बी सी माइनस समेशन ऑफ ए बी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो राइट इक्वल टू जीरो सॉरी तो ये अपने को फंक्शन को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है देन just take the partial this is 2a this is like bc plus lambda times 2bc minus look minus b minus c right yeah and this must be zero of course uh, okay so that's like bc times 1 plus 2 lambda is equal to b plus c lambda right this must happen in fact huh okay so whenever this is going to reach maximum अपने को ये चीज मिलनी चाहिए मोर लाइक ऐसा बोल दो ना कि 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी इज इक्वल टू 1 प्लस 2 लैम्डा अपॉन लैम्डा ऐसा बोल दो राइट सो जब भी ये चीज मैक्सिमम मतलब होगा इसका देन दिस मस्ट हैपन बट देन या व्हाट यू आर बेसिकली सेइंग कि ये जो चीज है इसका समेशन होने वाला है इसका समेशन कर डालो एंड देन उसको डिवाइड करो 2 से सो 1 प्लस ए प्लस या यू गेट द आइडिया कि ए बी सी तीनों की चीजों इक्वल हो जाएगी सो दैट राइट तो जब भी इसका एक्सट्रीम वैल्यू मिलेगी एट दैट पॉइंट ए बी सी मस्ट बी द सेम बेसिकली ये जो कंडीशंस है वो अपने को वही दे रही है राइट व्हाट डज दैट मीन्स कि जस्ट पुट कर दो ना एबीसी को सेम पुट कर दो एक्स पुट कर दो so this is basically 2x cube minus x plus 1 is equal to 0 right or alpha is less than or equal to x cubed you want to find what the range of alpha is अच्छा so कौन सी x की वैल्यूज के राइट मतलब ये जब भी अपने को मैक्सिमाइज मिलेगा ए बी सी उन x राइट उन पर्टिकुलर केसेस के लिए अपन ऐसा लिख सकते हैं फिर अपने को मिलेगा उनके उनके सॉल्यूशंस मिलेगा अपने को एंड देन वी हैव टू सॉल्व द थिंग ओके होपफुली काम कर जाए सो एक्स क्यूब प्लस वन यानी कि एक्स प्लस वन टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन और एक्स क्यूब माइनस एक्स इज जस्ट x minus 1 is like x plus 1 times x minus 1 you can say x equal to 0 so either x is negative 1 which makes no sense क्योंकि ये सारे पॉजिटिव है so ये तो हटा दो और x square minus x plus 1 plus x square minus x is equal to 0 मतलब कि 2x square minus 2x मुझे क्यों लग रहा है बहुत गंदा होने वाला है क्योंकि अपने को इससे कुछ ऐसे या नॉट गुड वैल्यूज मिल रही है अपने को ओके यहाँ पे एक्स स्क्वायर शिट 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर यार क्या कर रहा हूँ मैं ओके दैट शुड बी द थिंग थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको फिर सो 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो x माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पे एंड देन minus x square plus 1 is like okay plus x minus 1 minus is equal in fact minus x minus 1 and then x plus 1 is equal to 0 मैंने गलती कर दी right so either x is 1 which looks like a possibility or you have 2x square minus x minus 1 is equal to 0 मतलब कि more like 1 plus x minus 2x यानी कि 1 minus 1 plus 2x and then 1 minus x is equal to 0 right so once again either x is equal to 1 or x is equal to negative 1 upon 2 this makes no sense right तो ये तो गलत है x is equal to 1 is the only possibility for extremum values अच्छा जब x equal to 1 रहेगा तो what's the value of you know 2abc so it'll be 2 so you are saying कि अच्छा ये मिनिमम वैल्यू है कि मैक्सिमम वैल्यू है होपफुली ये मैक्सिमम वैल्यू हो doesn't look like that of course yeah लग तो नहीं ना कि मैं ये मिनिमम ऐसे या इफ यू वांट टू एक्चुअली यू नो ये इसके रूट्स कितने सारे आने वाले बहुत सारे आएंगे ना दिस इज नॉट गुड यार दिस इज नॉट गुड इसके तो बहुत सारे रूट्स आ जाएंगे इस टाइप से सो आई डोंट नो थिंक ऑफ इट एज अ फंक्शन ऑफ b and so think of a as a function of b and c so for some certain b and c you will have some value of a and चलते जाओ right so अगर मैं a b c को बहुत बड़ा कर देता हूँ then this will also be in fact really big or something this is giving us no result in fact
आर वी श्योर कि ये चीज मैक्सिमम वैल्यू है दैट राइट वी डोंट नो यार वी डोंट नो अगर ये मैक्सिमम है देन व्हाट यू थिंक इज लाइक 2 is bigger or equal to alpha which once again it makes no sense क्योंकि राइट इसमें तो है ही नहीं ऑप्शंस में सो हाँ whatever just next question अब मैंने आप सब कुछ ट्राई करके देख लिया मैं ऑनेस्टली बोल सकता हूँ कि ये गलत लिखा है नहीं ये अजीब चीज है ऐसा होता नहीं है कि वो एक्चुअल में बाउंडेड रहे राइट मुझे लग तो नहीं रहा है कि बाउंडेड रहने वाला है एनीवे नेक्स्ट क्वेश्चन डी if alpha plus beta is not equal to 0 and the planes x plus y plus z equal to 0 and this plane have one common point alpha x minus beta y plus z equal to 0 then यहाँ पे हाँ okay think अच्छा ये जो planes है these have one common point that means a unique solution of course okay let's do it unique solution बोल रहा है ये अजीब नहीं दिख रहा है या अजीब तो दिख रहा है ये anyway just solve this thing so 1 1 1 oh and ये सारे के सारे 0 wait a second there is already a common point which is 0 comma 0 comma 0 and you are saying it has just one common point ठीक है ऐसा बोल दो ना कि डिटरमिनेंट जो है वो 0 नहीं है that's all you had to say really so ये जो डिटरमिनेंट रहेगा अल्फा माइनस बीटा 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 1 ये डिटरमिनेंट 0 नहीं है that's all you are actually saying really ठीक है now we have to somehow figure out इसको कैसे करें वही यूजुअल इसको अब कॉपी डाउन कर देता हूँ लाइक अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा यू नो व्हाट आई एम थिंकिंग कि माइनस बीटा और माइनस बीटा स्क्वायर हाँ राइट 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 इट्स लाइक ये सॉल्यूशंस है सो यू कैन ओके लेट्स जस्ट फिगर आउट अ पॉलिनोमियल मैं ऐसा एक पॉलिनोमियल क्रिएट करता हूँ एक्स टी स्क्वायर प्लस एक्स टी प्लस 1 राइट जब भी ये 0 होता है तो अपने को यू नो यू विल गेट सम zeros of course what you are saying is कि एक ऐसा कोई पॉइंट है I mean of course 0,0,0 wait what oh मैं सब कर ही क्यों रहा हूँ sorry just gotta deal with this thing this should not be equal to 0 right whatever alpha square beta square yeah whatever it's got 1 1 अब क्या पहले ऐसे जाएंगे सो माइनस बीटा अल्फा स्क्वायर फिर ऐसे सो प्लस बीटा स्क्वायर एंड देन ऐसे प्लस अल्फा एंड देन मैंने उल्टा कर दिया सॉरी हाँ सॉरी मैंने उल्टा कर दिया पहले ऐसे जाते सो माइनस बीटा फिर ऐसे प्लस अल्फा स्क्वायर एंड देन प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर फिर माइनस ऑफ दिस थिंग सो प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर and then minus of this thing minus beta square and then ये चीज minus alpha this should not be equal to 0 okay इस time पे you know what it is set minus beta to be I don't know minus gamma yeah मतलब इतना इसको yeah let's just say minus beta is gamma so it's like alpha square plus alpha gamma square plus it's interesting यहाँ पे मुझे वो भी नहीं मिला okay should I have got you know कुछ भी मिल रहा है okay जो भी है and then plus gamma okay minus gamma alpha squared minus beta sorry minus gamma squared minus alpha it should not be equal to 0 and now we need to figure out कि ये condition से क्या मिलता है अपने को ये कैसी कंडीशन है इससे पहले क्या मिल रहा है ये तो इट्स नॉट ओके लुक गामा माइनस अल्फा अपन कॉमन निकाल सकते शायद से राइट यहाँ से कॉमन निकालने पे व्हाट यू गेट माइनस अल्फा प्लस गामा राइट और यहाँ से अल्फा गामा कॉमन सो गामा माइनस अल्फा एंड दैट्स व्हाई जस्ट अल्फा गामा
and then यहाँ से तो already था ही, so just +1. This should not be equal to 0. Um, we know that gamma is just negative beta, so it's like saying alpha minus gamma is not equal to 0. So मतलब कि ये तो वैसे भी 0 नहीं होगा, so all you have to care about is that this must not be 0. So 1 plus alpha gamma should not be equal to alpha plus gamma. और बीटा में अगर मैं लिखूँ so 1 minus alpha beta should not be equal to alpha minus beta. Okay, like alpha beta, sorry, alpha beta plus alpha minus beta, this one should not be equal to 0. So beta plus, oh yeah, of course, alpha minus 1 times beta plus 1 should not be equal to 0. So alpha should not be 1 and beta should not be -1. So q तो रहेगा, but about this thing, yeah, कुछ भी नहीं दिया इसमें. So anyway, q is the answer for this. Next, 17. Let dy dx of f of x be equal to this thing, e power sin x upon, बहुत देखे ऐसे फंक्शंस लग रहा है मुझे. ओके, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 4 of 3 upon x sin x cube is equal to f of k minus f of 1. What the possible values of k is. Okay, f of 1, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? क्यूब क्यों दिया है यहाँ पे? कुछ से कुछ हो गया. साइन एक्स क्यूब मतलब साइन ऑफ एक्स क्यूब बेसिकली, राइट? नॉट साइन एक्स का क्यूब. हाँ, अलग अलग रहेंगे ना. ओके, क्यूब क्यों दिया है? अच्छा, मैं अगर इसको एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स को, हाँ ओके, फिर मैं लिख सकता हूँ इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 4 ऑफ, तो 3x स्क्वायर एंड देन e पावर साइन ऑफ x क्यूब upon x cube and then dx, right? Yeah. So it's just integration from, so अब तो सही है कि यहाँ पे dx cube हो जाएगा and then it's just, you know, this whole thing is just the derivative of f of x, right? And then it's going to be actually more like f of x cube, you can say. So हाँ, जो भी है, right? So in the end it's just that कि ये, and it's going from what to what. So from x is equal to 1 to 4, but then x cube is actually going to go from 1 to 64. So it's f of 64 minus f of 1 basically, right? I mean, this was just, you know, f of the Euclid integrals are just f of x cube. You can think of it like that. Going from x is equal to 1 to 4. Okay, so k is just 64. So q is the answer, a ka q. Next, b, limit as x tends to 0 of ये चीज. Look, continuous function, continuously differentiable as well. Perfect. अच्छा, x approaches 0, ये चीज approaches 0 as well. This thing is also approaching 0. Just take derivative on both sides. So या फिर okay, secant square t है, या फिर dt की छोड़ दिया इन लोगों ने. क्या है यार, कितना ये dt यहाँ पे दिया इन लोगों ने. सीरियसली यार, क्या प्रॉब्लम है लोगों, यहाँ पे क्यों dt दिया? In any case, secant square t dt is just a derivative of tan of t, right? So it's going from 0 to x square. T is going from 0 to x square. So this thing is more or less just tan of x square, right? Yeah. Of course, 0 to x square. Yeah, the x square तो positive है in any case. So and then it's also approaching 0. So वो 0 to 1 वगैरह जो भी रहेगा, you get the idea. And then that thing upon x sin x. And by the way, x sin x is also positive. Doesn't matter if x is bigger than 1 or negative. Sorry, if it's bigger than 0 or less than 0, right? It's still positive. So अब इसके अंदर क्या कहते, just, you know, firstly the approximation x square upon x square is going to be 1. So b का answer 1 है, b का s. So to c. If f of x is equal to e power x, g of x is just x. Okay,
and f of t is this thing. Wait, यहाँ पे तूने g of x डाला है क्यों? इंडियन जब वो सिर्फ आइडेंटिकली x है हर जगह पे, so it's like saying f of t minus x times x dx, right? It's going from 0 to t. हाँ, yeah, and then it's like e power x. तुम्हें क्या है ये, क्या है ये? Just e power t बाहर निकाल लो. It's going to be e power, e power negative x times x dx, and it's going from 0 to t, basically, right? That is our capital F of t, basically. And yeah, so just want what f dash. So f dash of t is basically like, okay, e power t कर दिया, integration from 0 to t of e power negative x dx, जो भी ये होता होगा, right? And then plus e power t और फिर इसका derivative which is going to be e power negative t times t. So ये तो basically t हो गया ना, right? So it's going to be t plus ये सारी गंदी सी चीज. Okay, and we just want f dash of natural log 2. So 0 to natural log 2 or whatever. हम basically बोल रहे हैं कि ये इंटीग्रल को ढूंढो क्योंकि उसके अलावा सॉल्व नहीं होगा. So e power negative x and then you got x and then dx. हाँ, we need to solve that. We need to solve that. Okay. क्या करो? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ऑफ कोर्स. तो जस्ट इंटीग्रेट दिस गाय, डिफरेंशिएट दिस गाय. इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? नेगेटिव e पावर नेगेटिव x एंड देन दैट टाइम्स x इज गोइंग फ्रॉम 0 टू t एंड देन माइनस प्लस बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ e पावर नेगेटिव x और यहाँ पे क्या 1. सो वो तो ऑब्वियसली नेगेटिव e पावर नेगेटिव x रहेगा. वंस अगेन गोइंग फ्रॉम 0 टू t. कूल. सो ये चीज तो जस्ट e पावर negative t, but this guy, right, this guy, it's going to be negative e power negative t and then plus 1. So 1 minus 2 e power negative t, ये चीज है, right? Just put that in there. So in fact it's just going to be t minus 2 plus e power t. That's what this thing is. So yeah, that's going to be f dash. So just put natural log 2. Wait, what? But then what? Wait, what? Wait, okay, wait a second. You know e power t minus 2, ये भी चीज थी, right? Yeah. So उसको भी नहीं अपन डायरेक्टली डिफरेंशिएट, जिसमें भी e power t plus 1 basically. बट फिर अपने को ये कैसे मिल गया? यहाँ पे t कैसे आया? इसका डेरिवेटिव तो अपन ऑलरेडी यहाँ पे ले चुके हैं, एंड देन इसका डेरिवेटिव कैसे होगा? e power negative t times t, of course. That times of e power. Yeah, that's how it became. Okay. This is crazy. कुछ तो गड़बड़ हो रही है. Oh, okay, sorry. This went from पूरा उल्टा जाओ. Look at this, यार. क्या कर रहा हूँ मैं आज? Negative t e power negative t, of course, and then minus. Right. चलो अब ये चीज पुट करो इसमें, और of course this times of e power t. So basically you are saying negative t negative 1. यही करना है अपने को. Yes, negative t negative 1 and then plus e power t. Basically अपने को ये चीज यहाँ पे पुट करनी है. So वो चीज plus t, just e power t minus 1. So whenever we put t equal to natural log 2, this will be 2 minus 1, which is 1. So c का भी s हो जाएगा. Next, d. The degree of the differential equation expressing the family of the curves y squared equal to 2c times x plus square root c. C is bigger than 0. Okay. So c is a constant. We don't even care what this thing actually is. Huh. Yeah. Okay. Wait, ये क्या हो गया? अच्छा, बैटरी हो गया. ओके, तो क्या था? d का था, राइट. इसकी डिग्री क्या है? For differential equation express the family of these curves. You know what I'm thinking? Just for double differentiate करो and just say की डिग्रीज की 2 है or something. या फिर okay, the
अदर वे टू डू इट इज कि एक्चुअली तुम स्क्वायर रूट सी के लिए सॉल्व करो, राइट? दिस इज जस्ट गोइंग टू बी रियली बैड। तुम्हें यहाँ पे स्क्वायर रूट सी स्क्वायर रूट सी मिलेगा, मतलब वो क्यूबिक है इनफैक्ट, मतलब तुम सॉल्व कर सकते हो, बट वो कितना गंदा होगा यार। उसमें प्लस माइनस वगैरह डालने पड़ेगा हर जगह पे, एंड देन just not nice. In the end, what you get is some kind of cubic, which is, yeah, it's hard. It's really hard to solve. So degree equal to 2 or something. You know, I seriously think ये डिग्री 1 हो सकती है अगर मैं एक्चुअली वो क्यूबिक को सॉल्व कर पाया, क्योंकि इसमें एक ही कांस्टेंट है जो फिर वो एलिमिनेट करना है, राइट? some other way ऐसा कुछ भी करूँ कि मैं जस्ट समहाउ कैंसल द होल थिंग, कि वो सी वहां पे रहे ही ना, राइट? कुछ भी ऐसा करना है मुझे। Okay, so y square is 2cx plus c square root c. So then 2y y dash is just 2c of course. But what that means is कि अपन अब c को ये चीज हर जगह पे पुट कर सकते हैं, right? Yeah. So this is like y square is equal to 2 ये तो 2 ऐसे भी जाने वाला है, so it's just gonna be y dash टाइम्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, c तो अपन बाहर, राइट? सो 2x प्लस स्क्वायर रूट c, थिंक ऑफ इट लाइक दैट। सो ये तो गया, y इज जस्ट y डैश, फिर y अपॉन y डैश, तो y अपॉन y डैश इज 2x प्लस स्क्वायर रूट c, और वी ऑलरेडी नो कि c इज जस्ट दिस थिंग, सो वो चीज़ यहाँ पे पुट कर मेरे को क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ y डैश, राइट? आई मीन ऑफ कोर्स c तुम स्क्वायर रूट में डाल रहे हो, एंड देन तुम ये डिफरेंशिएशन करोगे तो तुम्हें जस्ट ये मिलेगा। सो ऑफ कोर्स y डैश मस्ट बी पॉजिटिव, अदरवाइज ये मतलब ही नहीं बनता ना करने का, राइट? व्हाट डज इट मीन कि ये अपना इक्वेशन बन जाएगा, दैट्स इट, दैट्स ऑल यू एक्चुअली नीड। सो दिस इज, ओह सॉरी, अपने को डिग्री चाहिए, अपने को ऑर्डर नहीं चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन की। ओके, सो दिस इज, इसको उधर भेज दो, y माइनस, यहाँ तो ही हो रहा है, माइनस 2x y डैश इज इक्वल टू स्क्वायर रूट y डैश टाइम्स y डैश, इसको स्क्वायर करो एंड यू गेट अ थिंग। यहाँ पे तुम्हें डिग्री 2 मिलेगा, यहाँ पे तुम्हें मिलेगी डिग्री 3, सो आई थिंक 3 इज द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन, सो d का r होना चाहिए। नेक्स्ट 18, limit as x tends to infinity, sorry, negative infinity of this thing is finite and non-zero. The value of the limit is, so x tends to negative infinity of this thing is finite and non-zero. This thing is approaching infinity. This thing is also okay, it's approaching infinity. It's about 5. It's actually approaching negative infinity, lambda must just be 1/5, तब ये इसका कुछ मतलब बनता है, अदरवाइज ये ओवर पावर कर देगा, राइट? अगर लैम्डा उससे बड़ा है तो, और छोटा है तो ये ओवर पावर कर देगा। सो इट इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो, दैट्स ओनली वन वे दैट लैम्डा मस्ट बी 1/5। सो देन x बाहर निकाल लो, x, एंड देन यू जस्ट गॉट 1 plus 7x power 4 upon x power 5, 7/x बेसिकली, 7/x, and then 2/x power 5, और ये पूरी चीज की पावर negative 1/5, nothing minus x, that's what we're looking for। so it's like x, और फिर इसको टेलर एक्सपांड कर सकता हूँ, ये तो वैसे भी काम नहीं करने का, yes, like just be 1 minus 7/5x, right? और ये वैसे अपन स्किप कर डालेंगे, उसके आगे की टर्म से अपन स्किप कर डालेंगे, no big deal, then -1, so yeah, minus 7/5 is the limit, right? Minus, sorry, lambda must be 1/5, not -1/5, so यहाँ पे प्लस आएगा, 7/5 is the limit, so a का r। नेक्स्ट b का करते हैं, okay, limit as x tends to 0 of this thing, so 3/1 plus square root of 4 plus x, and then cosec of x, what about sin x, okay, x tends to 0, that's equal to e power x, then अच्छा जो x tends to 0 है, so this thing approaches क्या 1, right? I would say कि
हाँ जो भी है क्या फर्क पड़ता है, ऐसे भी अप्रोच इज वन देन इट्स एक्चुअली गुड इनफ फॉर अस. Yeah. So of course, what you will do is just say 1 plus ये पूरी चीज जो रहने वाली है 3 upon 1 plus square root of 4 plus x whatever, all of that minus 1 and that to the power of. तो इसको कुछ नहीं बोल, इसके अभी के लिए मैं h बोल रहा हूँ. So it's like 1 plus h, फिर मैं 1 upon h कर दूंगा and then ये सब की power h और जो ऊपर क्या था just sin x. तो ये चीज as h approaches 0, this thing is going to approach e. It's like e power h upon sin x. That's what this thing will be. So really all we really care about is like h upon sin x. What does that approach? If अगर वो कोई finite चीज approach करेगा, then this will be like e power something finite, and that means that will be the limit. So h upon sin x, h was just this thing. Okay, minus 1 कर दो. Oh yeah. So ये उधर भेज दिया. This is going to be like 2 minus square root of 4 plus x upon 1 plus square root of 4 plus x and then 1 upon sin x, the usual stuff. और फिर इसको मैं rationalize कर सकता हूँ. This can be written as just minus x and then upon sin x forcefully डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, and then rationalize करने पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 upon, वैसे भी x जो है वो 0 अप्रोच करने वाला है, so इसको डायरेक्टली 3 लिख दो and then this is going to उसका जो अपने rationalizing partner डालना पड़ेगा. Because of that, it's actually just 2 plus square root of 4 plus x, so 2 plus 2, 4. Which is 1 approach कर लेगी negative h. So negative 1 upon 12, right, q. So B का आंसर q रहेगा. So to C. C is the greatest value of this thing. F of x is equal to x plus 1 to the power 1/3 minus x minus 1 to the power 1/3 on 0 to 1 is. Okay. 0 to 1 is x plus 1 to the power 1/3 minus x minus 1 to the power 1/3. यार क्यूब्स के लिए होता है, क्यूब रूट्स के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. कैसे करूँगा? 0 to 1. 0 to 1. Isn't that like, oh wait, isn't that like 1 plus x की power, come on, seriously, 1 minus x की power 1/3. Okay, thing is 0 to 1 में ये चीज़ हमेशा पॉजिटिव है, राइट, मतलब पॉजिटिव या फिर 0, एंड देन ये चीज़ भी हमेशा पॉजिटिव या फिर 0 है. इनफैक्ट ये तो 1 से बड़ा है, राइट. सो इनका जो एडिशन है दैट्स काइंड ऑफ अ कांस्टेंट, सो दिस थिंग अपॉन 2 और फिर उसकी पावर 3. This thing is actually less than, right, power mean inequality में ये जो चीज है wait what, हाँ right, this will be less than or equal to the average, which is an average क्या है ये, of course just 1, right. So ये हटा दो क्योंकि वैसे भी क्यूब रूट. Yeah, so this thing is less than or equal to 2, और ये कब होता है when these guys become the same, that is when x is equal to 0. So right, greatest value is 2 and this happens at x equal to 0. C का आंसर P. Okay, D करते हैं. Minimum value of the function x times x plus 1, x plus 2, x plus 3 is, इसकी minimum value अपने ढूंढनी है. It's like a bunch of numbers multiplied together, और AP में नहीं ऐसे कुछ खास, तो just say x plus 1 u बोल दो, तो फिर it's like u x plus 1 को नहीं, यहाँ पे u plus 1 आ जाएगा, u plus 2 आ जाएगा, यहाँ पे फिर u minus 1 आएगा. That's not what I want. Let's say this thing is so u x plus 1 upon 2 upon u put करेंगे. So this is like u minus 1 upon u square minus 1 upon 2 square basically. So u square minus 1 upon 4 एक जगह पे, और दूसरी जगह पे मुझे मिलेगा u square minus, so यहाँ पे 1 upon plus 1 यानी कि 3 upon 2 का है, so 9 upon 4. तो अपने को बेसिकली इसको मैक्सिमाइज करना है, राइट, मिनिमाइज करना है. ओके, हाउ डू वी डू दैट? इसको मिनिमाइज या फिर उसको एज एक बाय क्वाड्रेटिक देख सकते हैं and then try to differentiate that and something. I don't like that, like the feel of that.
Yeah, I need to show some else. Really, that's not nice. Ah, isn't that like GM? Oh god, it's the AM GM inequality. अपन ये भी कर सकते थे, मतलब ये क्या सिर्फ एक बाय क्वाड्रेटिक है, बट इनफैक्ट सिमेट्रिक है, राइट? सो जस्ट इन्वॉल्विंग यू स्क्वायर इज एक्चुअली क्वाड्रेटिक. सो ये भी कर सकता हूँ, चलो ठीक कर ही डालते हैं. सो यू पावर 4 माइनस 10 अपॉन 5 अपॉन 2 यू स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 16 और वॉट एवर. अपने को बेसिकली इसको इसकी क्या मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है. सो नेगेटिव टी अपॉन 4 होता है, राइट? इट्स लाइक नेगेटिव ऑफ ये सारी गंदी सी चीज, राइट? या फिर इसको सी डैश डायरेक्टली तुम कर सकते हो ना. सो 9/16 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a. सो इसका इसका स्क्वायर, राइट? सो 25/4 एंड दैट थिंग अपॉन 4a, राइट? Yes, b square upon 4a. So it's going to be just 4. मतलब कि 9 minus 25 is like minus 16, of course. Minus 16 upon 16 minus 1. इसकी minimum value minus 1 है. And this happens at 5/4, I think. So that's okay. When u squared is 5/4, मतलब कि u is square root 5/2 or something. Plus minus क्या फर्क पड़ रहा है? But u is just x plus 1/2. So technically it's like when x is equal to square root 5 minus 1/2. तब अपने को मिनिमम वैल्यू मिलती है मिनिमम वैल्यू मिलती है अपने को ऑफ -1. पर इसमें -1 है ही नहीं. सो d का s, हाँ हाँ, इज दैट राइट? c dash plus b upon 4 b square upon 4, sorry, 24/16. It should work, यार. It should really work. Right, yeah, 5/4 का square यानी कि 25/16. It's got to be like that. -1 will be the near value, of course. और दूसरा इसका तरीका होगा कि मैं AMGM यूज करूँ. So it's the, हाँ, अपने को मिनिमम चाहिए, अपने को मैक्सिमम नहीं चाहिए. ओके, मुझे लग रहा था कि मैं AMGM कर सकता हूँ. नहीं, अपने को मिनिमम चाहिए. That's why this is the only way. So there we go. 5/4, sorry, नहीं, -1. -1 is the minimum value. But वो अपने को कब मिलता है? कभी नहीं. तब इसमें तो कहीं नहीं मिल रहा मुझे. So S. Next, 19. If the quadratic equation, this equation has the, okay, ये दो equation है, have a common root, and the value of the expression 5ab minus 2a square minus 3b square is, अच्छा, इसके दो रूट्स है, सॉरी, इन दो इक्वेशन से कॉमन रूट है, a common root. Value of is, हाँ, okay, it's like that कि right, just वो रूट ढूंढ लो, which is not that hard. तुम्हें सिर्फ x पर को एलिमिनेट करना है, and then just put that in there and get the thing done. It's that harder method, कुछ और easier नहीं है इसमें, मुझे डायरेक्टली इक्वेशन मिल जाए. नहीं, I think that's the easiest. Let's just do this thing. So 2 times ये चीज और फिर -3 times ये चीज. It's gonna be 2a minus 3b times x plus 2 minus 3, I think. So it's equal to 1 basically. X is equal to 1/2a minus 3b, right? I mean, तुम ये जो इक्वेशन लिख रहे हो 3x square plus blah blah blah, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 plus a times 1/x plus 1/x का square is equal to 0, and 1/x because ये ज़्यादा doable है. So it's like 2a minus 3b का square plus a times 2a minus 3b plus 3 is equal to 0. Basically इतना ही है, बस यही कंडीशन चाहिए, and then you will have a common root. So 4a square minus 12ab plus 9b square, और फिर यहाँ पे क्या plus 2a square minus 3a, और sorry 3ab, right? Because yeah, plus 3 is equal to 0. ये एवरेज तुमने 3 क्यों डाल दिया? कितना अजीब लग रहा है. Whatever. Is it correct? Must be.
Okay, so this is 6a square minus 15ab plus 9b square plus 3 is equal to 0, huh? It's like 3a square minus 5ab plus 3b square minus 3 is equal to 0. Sorry, plus 3. Wait, okay, ये 3 तो गया ना वैसे भी, तो plus 1 is equal to 0. अपने को चाहिए 5ab minus 2a square. Shit, 3 से डिवाइड किया मैंने, क्या कर दिया. So 5ab minus 2a square minus 3b square, that's going to be equal to 1, right? So a ka r. Next is if the roots of the quadratic equation, ये equation are real and distinct and differ by at most 4, then the least value of v is. Okay, differ by at most 4. It's like saying that, you know, your difference which is so alpha plus beta ka square and all that stuff, right? More or less we just have, right, वो जो difference रहने वाला है, that's like d upon a, right? Yeah, क्योंकि I mean you just get minus b plus or minus square root of discriminant upon 2a, that's the roots, but उसका जो difference रहेगा it's going to be magnitude wise, it's going to be square root of d upon a, right? अपने को वो चीज ढूंढनी है basically. That's a difference, and that's at most 4, and also it's discriminant is positive. Let's figure out what discriminant is. It's first of all, discriminant is just 36 minus 4b. So right, this thing should be positive, of course, which means that b has to be less than 9. Or फिर इसका square root लेना है, like okay, and it's at most 4 or whatever. Just do this thing, you know. So square root of this is like 2 square root of 9 minus b. Nothing upon a, so it's just 1 in fact. And that's going to be less than 4. So basically ऐसा बोल रहे हो, which means 9 minus b is less than 4. So b has to be bigger than 5. So b is between 5 and 9. That's it. Least value of b is 5, of course. This thing. Right, because when it's 5 it's exactly 4, so that's gonna work. So least value of b is 5. B ka q. So to see if x belongs to real, the integral value of the expression, this expression cannot exceed. Seriously, integral value of this expression, huh? That's weird. You mean like the greatest integer function of this or something, or you actually mean only the integral values of this expression? Whatever, इसकी minimum value cannot exceed. Oh हाँ, ये उल्टा वाला बोला है, that's why it's okay. So ठीक है ना, just क्या करना, negative d upon 4a मतलब कि negative of this is like 5 minus 4ac, so plus in this case plus 4 times 7 times 2, which is 56. Okay, minus d upon 4a is going to be what? 4 times 2, 8. There we go. So wait, ये तो बहुत गंदा सा उसकी वैल्यू आ रहा है. हाँ. Oh, it's negative. Well, whatever. So ये अपनी minimum value है, which is like 7 plus 25 upon 8, which is actually just 3 plus 1 upon 8. So 10 point ये जो भी हो रहा होगा 125 जो भी है, right? ये जो चीज रहने वाली है, that's the minimum value, and we want the integral, sorry, this is a maximum, and the integral value cannot exceed this value, and of course that just means it actually cannot exceed 10. So C ka P. Let's go to D now. If the inequality, this inequality is true for all x belonging to real, then the least integral m is. Oh, this is true for all x belong to real. इसका discriminant मतलब less than 0 है, and this thing must be, so m must be bigger than 2, जो कि यहाँ पे नहीं है, and then the discriminant thing. So कौन सी होने वाला है, वैसे भी just get rid of that. 4 is just, you know, bigger than m plus 4 times m minus 2 basically. Yeah, so m square
प्लस 2m माइनस 8 की उधर आएगा माइनस 12 दैट इज लेस देन 0. 12 के लिए 12 के लिए 6 and 3 नहीं, सॉरी 4 and 3 नहीं, 6 and 2 नो, ये तो हो गया माइनस 8 12 ऑफ कोर्स. Oh, okay, least integral value of m. Okay, so it starts off at 2 because it has to be bigger than 2. और ये चीज़ होना चाहिए, right? This is like m plus 1 का square is less than 13 or something. So square root of 13 is, less than, sorry, it's bigger than what? Square root of 13 is 9, so 3 point something. Yeah, power 2. Square root of 13 is 3 point something, of course, right? So yeah, m plus 1 is less than 3 point something. So m is less than 2 point something. So there we go. M can at most be 2. So yeah, like, okay, least and the maximum. Okay, both of these values are just 2. Wait, what? Huh? M has to be bigger than 2. Yeah, but then it's actually saying that, but if it's 3, so ये 4 square, that's not less than 13. This is not good. क्या गलत हो रहा है? B square is less than, B square is bigger than 4 ऐसे किया मैंने यहाँ पे, and then it's like 2 times of 4 basically, उसका square कर दो, so उसका square, oh god, 16, minus 8 आएगा यहाँ पे, minus 8 minus 16 is going to be minus 24. So 24, whatever, यहाँ पे क्या जाएगा 25 I think. There we go. So 5, right? Yeah, basically it belongs to the region 5 plus 6 and then 5 minus 1 is 4. So 4 to 6 region में रहने वाला है, right? Yeah, so least integral value, that must be 5 in fact. So Q. Okay, that's it. 20. Last question. Sum of the binomial coefficients of this thing is equal to 256. Constant term in the expansion is, wait, you just want the binomial coefficients, you don't even want, it's 2 power n. Okay, 2 power n is equal to 256. That's easy. मतलब क्या है, 16 square n, so 2 power 8 basically, right? So n should be 8. N is 8, and then you just want the constant term in the expansion. What's the coefficient that, right? ये तो easy है. So 8c4, just a wild guess, 2x power 4 and then 1 upon x power 4. That's the only constant term. So yeah, 2 power 4 and then 8c4. So 2 power 4 is just 16. That times 8c4 is 8 times 7 times 6 times 5 upon 4 times 3 times 2. ये तो गया, ये भी गया, ये तो 10 हो गया. 7 times 16 is like 6. 7 and then 42 is just 1120. So Q is the answer. A का Q. अब मैं समझ रहा हूँ क्या करना मुझे मैट्रिक्स मैच पे. इसमें इतना इसमें अच्छे क्वेश्चन नहीं है, एक्सेप्ट कि बहुत ही हार्डकोर कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है. ओके, P. Coefficient of x power 4 in this expansion is जो भी है. So x power 4 चाहिए अपने को. 10 से स्टार्ट करेंगे, हर बार तुम क्यूब से नीचे जा रहे हो. वेट, व्हाट? अगर तुम 6, राइट? सो -3 तुम 6 पे पहुंच जाओगे. देन सो तुम्हारी 0, देन 1 पे तुम्हारा 7 रहेगा, देन वापस तुम्हारा 1. सो RC2, राइट? 10C2 you gotta have x upon 2 power 8 and then -3 upon x square power 2. So यहाँ पे 4 आएगा, पे 8 आएगा, that's 5 power 4, right? So 10 into 9 upon 2 and that times क्या जगह है 3 square upon 2 power 8. और वो नहीं रहेगा यहाँ पे of course because क्यों मेरे साथ क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? For this expansion, it's got to be this thing, but वो है ही नहीं यहाँ पे as expected.
क्या है यार, अच्छा 256 टाइम्स, ओके ओके देन इट्स डूएबल। सो 256 लाइक 2 पावर 8, तो कैंसिल हो गया, बहुत ही अच्छा, नाइस नाइस राइट, या so this will just be 5 times 3 power 4, you can say, like okay 81 basically, 405। so इसका s रहेगा, p का s, c करता हूँ, the sixth term in the expansion of this thing is 560, 5600, then x is, okay, sixth term is basically r equal to 5 term, so no, अच्छा ये 8 है क्या, 8c5 1 upon x power 8 upon 3 की power 3, so like 1 upon x power 8, and then ये सब, so x squared, oh so x is basically whatever, just gotta have x power 10, right, it's power 5 of course, and then log base 5, so log base 10 of x to the power of 5, that is equal to 5600, so x square, then you gotta have this thing, 8c5 is just 8c3, which is 8 into 7 into 6 upon 3 to 2, ये तो गया 56 हो गया, ये तो उधर मर जाएगा ये, log base 10 of x की power 5, that is equal to, you know, ये तो गया, तो पूरा का पूरा गया, you know, just 100 basically, हाँ, can it be 10, does that work, हाँ एक्चुअली नहीं, ये 1 हो जाएगा and this is going to be 100, right, so x is 10, right, so c का p है, next मेक अ वाइल्ड गैस, डी का आर होगा, ठीक है, 1 plus x times 1 plus x plus x पर, ओके ये नया है, when it is in the ascending powers of x, then the highest power of x, हाँ seriously, it's gonna be 1 plus 2 come on 5 50 so d का r, मुझे लगा तुम कुछ और अजीब पूछोगे इसमें से, नहीं ठीक है चलिए, so 20 questions done in one day, बहुत घटिया स्कोर, बट फिर सोचो यार एक्चुअली में हर क्वेश्चन 4 क्वेश्चंस थे, सो टेक्निकली मैंने 80 क्वेश्चंस किए, राइट, एनीवे नेक्स्ट नहीं, बस आज के लिए तो काफी, सो आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।